Hello, 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 hello. Hello. And let us continue. Let us continue with our course. Okay, not good. Okay. A new language uses the English alphabet for the order of its known. Okay. List of words. Whether words are claimed to be sorted. Okay. The correct order of the letters in this alien language based on the given word. अच्छा words are sorted. पूरे words sorted हैं. The order is valid. Written as string containing the unique letters and lexicography. ठीक है. कोई भी एक. या अगर वैसा हो नहीं सकता तो एम्प्टी स्ट्रिंग. जैसे बा एलसीडी. ट्रू फॉल्स क्या बताना. ओके. तो आई नो कि ये वाला एलिमेंट इससे पहले है एंड दिस वाला उस लेक्सोग्राफिक सॉर्टेड है. ओके. मतलब आई नो फॉर वन थिंग फॉर श्योर. हमको रिटर्न क्या करना है सारे 26 ना. इससे वाला कोई भी एक ऑर्डरिंग कर दो और बाकी सारा तो आई गेस. ओके. सो कैन आई से. सो बी एंड ए राइट अलग अलग है. सो बी ए से पहले आता है आई नो फॉर श्योर. अब ए एन ए सेम है. बी एन बी सेम है. सी सी सेम है. डी है. दैट मीन्स डी ए से पहले आता है एंड ए सी से पहले आता है एंड बी डी से पहले आता है. तो आई थिंक इतने से जितने भी हमारे पास लेटर्स है उन लेटर्स के अगर मैं एक को ग्राफ बना दूँ लेक्सोग्राफिकल वाला उसके बाद में उसके बाद मैं ग्राफ पे शायद टोपोलॉजिकल सॉर्ट करके आई वुड गेट अ सीक्वेंस ऑफ ये जो भी लेटर्स है जिनका मैं बता सकता हूँ. राइट. So let's try. So ग्राफ बनाना सबसे पहले तो एडजेंसी लिस्ट अगर मैं बनाऊँ एक डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी फ्रॉम कलेक्शंस import default dict. Right. Up now I have to look at each pair of this whatever shift for I in range.
वन से लेके लेन ऑफ वर्ड्स। ओके सो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? वन से मैं स्टार्ट करूँगा, उससे पिछले वाले के साथ पेयर करके देखूंगा व्हाट वाई दिस ith वाला इज बिफोर द jth वाला। राइट। ओके। तो इसमें केसेस हो सकते हैं, राइट? अगर दोनों सेम लेंथ के ABCD सेम लेंथ के है तो कहीं ना कहीं चेंज होगा। जैसे कहीं पे भी मेरा अलग कैरेक्टर आ गया, जो भी कैरेक्टर पहले है वो ग्रेटर है ऑर्डरिंग में। बट मान लो ऐसा कुछ है ABC एंड ABCD, जितने लेटर्स है वो सारे सेम है, लेकिन बिकॉज ये एक एक्स्ट्रा लेटर है, ये पहले आया है, इस केस में मैं कुछ और इन दोनों पेयर से मैं कुछ इंफॉर्मेशन गेन नहीं कर सकता। राइट, आई कैन नॉट गेन एनीथिंग फ्रॉम दिस। लेकिन क्या उल्टा हो सकता था? उल्टा नहीं हो सकता। दैट मीन्स क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर पहले वाले की जो पहले आ रहा है उसकी लेंथ अगर छोटी है, अगर उसकी लेंथ छोटी है तो देर कुड बी ए पॉसिबल कि कोई लेटर चेंज है, और अगर लेटर चेंज नहीं है तो ये छोटा है इसलिए पहले आ रहा है। अगर मान लो उसकी लेंथ बड़ी है, ABCD पहले आ रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके अगले वाला ABC हो या AB हो या A हो। राइट, क्योंकि फिर ये पहले आता है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं लेटर चेंज है। सो आई नीड टू डू इज आई कैन गारंटी कि अगर मैं इस पहले वाले के लिए लूप लगाऊंगा, राइट, तो या तो मेरे को एक डिफरेंट कैरेक्टर मिलेगा, या तो फिर इसकी लेंथ खत्म हो जाएगी, ये होगा। आई थिंक सो। तो इन अगर मैं ले लूँ लेन ऑफ वर्ड ऑफ I-1, राइट, और j in range n, let's say something like this. I need to find the different character. ये ढूंढना है ना मुझे। ओके, इफ तो वर्ड वन ले लो, वर्ड वन इज इक्वल टू वर्ड ऑफ I, वर्ड टू इज इक्वल टू वर्ड ऑफ I-1, एंड यहाँ पे भी कैन से वर्ड टू। इफ वर्ड टू ऑफ j is not equal to वर्ड वन ऑफ j, दैट मीन्स दैट मीन्स ये अपना हमको डिफरेंस मिल गया, वी कैन ऐड दिस इन द एडजेंसी। आई नो फॉर श्योर, क्या आई नो फॉर श्योर कि पहले क्या आएगा वर्ड टू का? यप, वर्ड टू ऑफ जे पहले आएगा, उसके बाद आएगा वर्ड वन ऑफ, एंड देन आई कैन ब्रेक, क्योंकि पहले डिफरेंस पॉइंट पे ही मैटर करेगा। और अगर इसकी लेंथ खत्म हो गई, हमको कुछ डिफरेंस नहीं मिला, अगर इसकी लेंथ खत्म हो गई, हमें डिफरेंस नहीं मिला, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि हम कोई इन्फॉर्मेशन गेन नहीं कर सकते। सारे से लेटर सेम है और इसकी लेंथ ज़्यादा है, और ये कभी एरर नहीं देगा, क्योंकि एरर कब देगा? अगर इसकी लेंथ जे हुई नहीं उतनी, मतलब ये छोटा हुआ, और ये हो ही नहीं सकता क्योंकि वरना ये पहले आता। सो आई थिंक दिस शुड वर्क, और हमको पूरा हमारा ग्राफ बन जाएगा। नाउ वी नीड टू डू टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग इन दिस ग्राफ। ओके, दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। अब कौन से ग्राफ में कितने वो हैं?
सो अगर मैं इन ऑर्डर वाला, चलो नॉर्मल डीएफएस पे कर लेते, लेट्स सी। तो एक स्टैक पहले बना लो, एक विजिटेड भी हमको चाहिए। देन आई वांट अ psychoposort, right? टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो अगर है तो वेजिटेट को ऐड करो डॉट नोड में। उसके बाद यहाँ पे भी जा सकते हैं, और नेक्स्ट नोड इन एडजेंसी लिस्ट ऑफ ये नोड, if next node not in current path, not in current path, तो फिर कर लो टोपो सॉर्ट नेक्स्ट नोड। लेकिन मान लो कि अगर ये हुआ, दैट मीन्स साइकिल है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट नहीं कर सकते। अगर साइकिल मिली हमें, करंट पाथ डॉट ऐड एल्स, टोपोलॉजिकल सॉर्ट में अगर हम कुक हो गए साइकिल है तो क्या कर सकता हूँ? लेट्स सी कुछ करते हैं, अभी तो नहीं। लेकिन ये करने के बाद करंट पाथ डॉट रिमूव नोड, एंड देन स्टैक में प्रिंट करना है, स्टैक डॉट अपेंड स्टैक डॉट अपेंड नो। इसलिए चूज डीएफएस है क्योंकि यार नो क्लोज में क्या करूँ, बीएफएस में तो आसान था। तो व्हाट द फक शुड आई, मैं यहाँ पे चलो मान लो रिटर्न फॉल्स करा देता हूँ, एंड देन ऐसे इफ नॉट फोकस फॉर आई कैन जस्ट एंड इट एंड रिटर्न फॉल्स, राइट। एंड यहाँ पे अगर मान लो ये पूरा हो जाता है देन वी कैन रिटर्न ट्रू, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एक्चुअली टोपोलॉजिकल सॉर्ट करना। हाँ, अब टोपोलॉजिकल सॉर्ट करने के लिए I have to do like for जितने भी नोड्स है, राइट।
क्या एडजेंसी लिस्ट से करूँ टोपोलॉजिकल सॉर्ट? Yeah, I think so. For node and if node not in visited, अगर टोपोसॉर्ट नहीं हो सकता, if we cannot do a topological sort, then just return an empty. कि कहीं ना कहीं साइकिल है, कुछ नहीं कर लेकिन सारा अगर होता गया बढ़िया है, तो फिर आ जाओ वी गेट आउट एंड अपने स्टैक में एक्चुअल अब टोपोलॉजिकल सॉर्ट पड़ा है, तो वी कैन से result is equal to dot join star and then for character in जो भी बच्चों है A B C D E F A B C D E F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. If character not in stack तो result में ऐड कर दो and then we can return result I think. कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या? ओके वर्ड वन टू वर्ड ऑफ from a current path. Okay, how the fuck is it changing size? एडजेंसी लिस्ट में तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा. इस लूप में दिक्कत आ रही है. I have no clue what it's trying to say. For next node and adjacency list of node, which is fine. If next node not in current path, if not top of sort, next node and then current path same, so false. Varna. Then current path not remove कर दो node. I have no clue ये दिक्कत क्यों आ रही है. क्योंकि आउटपुट नहीं दिखाता क्या मेरे को? Actually, I'm gonna ask ChatGPT.
because I have no. What? मैं कहाँ कुछ नोट कर रहा हूँ? अच्छा। ओके। तो ये दिक्कत है। इसने वो बना दिया लिस्ट। तो मैं लूप लगा रहा हूँ। एंड देन मैं किसी नोड पे गया। So let's do one thing. Instead of looping for that GC list, I can loop on all these characters, है ना? Set of string dot join word. कैसे ये काम करता है? Print set of abc. whatever. Okay, काम करता है. Let's try this. Okay, false दिया मैंने. अगर कुछ नेक्स्ट नोड होगा ही नहीं तो ये अटेंड करके ट्रू कर देगा. दैट मीन्स अगर ये एडजेंसी लिस्ट में नहीं है, दैट मीन्स ये कहीं भी आ सकता है, राइट? ये अगर आ गया तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि इसका कोई रिलेशन नहीं है किसी और लेटर से, राइट? इट हैज नो रिलेशन विद एनी अदर लेटर. मेन दिक्कत तब होती है जैसे ए बी का रिलेशन है, तो ए भी पहले आना चाहिए. तो बी एन अगर कोई रिलेशन ही नहीं है तो वो लेटर कहीं भी है. देखो जो रिलेशन की जो दो पोजिशन है उनसे फर्क पड़ता है. ओके. तो मेरा फॉल्स कहाँ पे आ रहा है? लेट्स सी. एक तो सबसे पहला है वो ना, प्रिंट प्रिंट माई एजेंसी लिस्ट. एंड देन जब भी फॉल्स रिटर्न हो रहा है, प्रिंट नोड कॉमा करंट. पाथ क्या था? ओके. सो मेरे में क्या है? आई एम सेइंग बी का ये, डी का ए है, ए का सी है. लेकिन ये लाइन तो कभी प्रिंट ही नहीं हो रही. इसका जस्ट प्रिंट रिजल्ट क्या प्रिंट कर रहा है?
ओके, सो एक एक्चुअली में दे रहा है जो कि भी एकदम गलत है। सी ए दो बार कैसे आ रहा है? अच्छा, सबसे पहले तो इसका रिवर्स होता है। सी दो बार कैसे आ रहा है बहन? हाँ, तो इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो गया। अच्छा, वी ए एंड वी डी से ए एंड देन ए से सी। साइकिल बन रही है, ए से सी, बी से डी, डी से ए से सी। साइकिल तो नहीं है कहीं। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या हो सकता है? बी सबसे पहले, देन ए, सॉरी देन डी, क्योंकि डी पहले आएगा ए से, देन ए एंड देन सी। बी डी ए सी इज अ वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, जो कि मैंने एकदम सही है। सो ये रिजल्ट में बार बार ऐड कैसे हो रहा है? प्रिंट रिजल्ट। ओके, मेरी टोपोलॉजिकल सॉर्ट इज फक्ड। बी डी ए सी, ओके। My topological sorting is fucked up. ओके, सो अगर विजिट हो चुका है, इफ नोड इन विजिट। अच्छा, सवाल तो अभी नहीं होगा ये ऐड। ये यहाँ पे ऐड होता है, विजिटेड डॉट ऐड नोड। इफ नोड इन विजिटेड, आई कैन जस्ट रिटर्न। ओके, अगर पहले ही विजिट कर चुके हो और फॉल्स होना होता है तो खत्म हो चुका होता है। द ओनली थिंग दैट कुड बी इज ट्रू। ओके, अब बी डी ए सी आ रहा है सही। लेट्स ट्राई। अब प्रिंट हटाऊँ ज़रा। एक दो तीन चार। फॉल्स थोड़ी दे रहा है मेरा आउटपुट। आई एम रिटर्निंग दिस थिंग, इसको फॉल्स कैसे लग रहा है? क्या मेरे को सिर्फ ये रिटर्न कराना है? एक तो ये रिटर्न क्या जाता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ओके सर, जो वर्ड्स है वो इस सारे 26 लेटर नीचे चूज किए थे। ट्राई। इसका भी एक ही मतलब है कि इन्होंने ये है सी सी ए। तो ये तो सॉर्टिंग इन्होंने गलत करी है। लेक्सोग्राफिकल सॉर्टिंग।
द शॉर्टर सीक्वेंस कम फर्स्ट है ना, ये तो इन्होंने क्या करा है, शॉर्टर सीक्वेंस को बाद में डाला है, दैट मीन दिस इज नॉट अ लेक्सियोग्राफिकली सॉर्टेड। बहन चो थोड़े चूतिया है क्या यार, ये गीक सवाल ढंग से लिखो ना। आर क्लेम्ड टू बी, अच्छा। अब आई डोंट फकिंग नो व्हाट। ट्राई टू डू दिस। ट्राई ब्लॉक लगा रहा हूँ मैं डीएसए में, होली फक। और ट्राई में बहन चो जावास्क्रिप्ट थोड़ी लिखता हूँ, एक्सेप्ट अगर कुछ एरर आता है जैसे लिखता हूँ। अच्छा सॉरी, ये ट्राई फॉर ब्लॉक के बाहर आएगा। सो ट्राई दिस थिंग एंड ट्राई ए फॉर लूप। अगर नहीं कर पाओ देन जस्ट बेटा। ओके आई डिड इट देन। एक्चुअली बुलशिट क्वेश्चन बिकॉज ऑफ दैट थिंग। बट बहन जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट जो मैंने कल ही करा था वो भी मैं भूल गया। बाद में विजिटेड ऐड होता है, बाद में विजिटेड ऐड होता है, याद रख लो। ऑन फकिंग लॉर्ड मैन। चलो अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे को ये डीएफएस से करना है, मतलब डीएफएस से छोड़ लिया बीएफएस से, हमने एडजेंसी लिस्ट बना ली। नाउ नोड इज इक्वल, nodes is equal to len of set of whatever dot join was, right? ये सारे मेरे नोड्स in or in degree, let it be node of 0 for node and node। usually list देता है, मैं मैप ले रहा हूँ, I don't care। then I can say for node and adjacency list, for next node and adjacency list of node in degree of mm, next in degree of next node plus equal to 1। अब सबके इन डिग्री निकल गए। नाउ फॉर नोड इन इन डिग्री क्यू बनानी है ना, सबसे पहले क्यू को इंपोर्ट करना पड़ेगा। T0 dq if in degree of this node is equal to 0, q dot append node। अब we can start our topological sort while q node is equal to q dot populate for new node in adjacency list of this wala node in degree of this new node minus equal to 1। then if this
अगर ये 0 हो जाए, रिटर्न क्यू डॉट असेंड न्यू नोड, एंड ये करते जाना है. एट द एंड ऑफ दिस साइकिल, दिस लूप, इफ अगर कोई से भी इन डिग्री बचा, दैट मीन्स इफ, अच्छा रिजल्ट में तो डाल ही नहीं रहा मैं. रिजल्ट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग एंड देन रिजल्ट प्लस इक्वल टू नोट कर दो, एंड रिजल्ट प्लस इक्वल टू फोर. Then I can say, I can now say if any किसी में एक पे भी 1 से 0 नहीं हुआ तो any of क्या in degree dot values return empty, वरना we can return result. If any okay, let's see. Okay, lovely. ऐसे भी BFS TFS दोनों से कर लिया. Very nice. You have to graduate part view. And let us move on to the next part. मैं नंबर बढ़ाना भूल जाता हूँ हमेशा. Is this a question या theory? Sorry. Third start and like a graph. ओके, शॉर्ट मतलब BFS करना क्योंकि सबका वो तो सेम है. BFS करो, जहाँ भी लेवल पे आ रहा है उसको स्टोर कर लो. easy. कितने नोट्स है n इज इक्वल टू लेन ऑफ एडजेंसी लिस्ट, राइट. सोर्स है मेरे पास. रिजल्ट इज इक्वल टू साइकिल भी हो सकता है. ओके, दे कैन बी साइकिल्स एज वेल, बट आई डोंट केयर, राइट. BFS में जो सबसे पहले आएगा वो कर दूंगा, फिर विजिटेड में ऐड हो जाएगा तो फर्क पड़ेगा नहीं. ओके, सो रिजल्ट अपना हो गया. Return -1. Okay, so we can start with the -1. -1 into n. एक सेकेंड. अच्छा हाँ, नेवर माइंड. मैम रिजल्ट है. रिजल्ट ऑफ अपना सोर्स कर दो 0, एंड देन जस्ट स्टार्ट डूइंग अ BFS. if node in visited, we can just return, वरना visited dot add node for next node. अच्छा, फंक्शन थोड़ी बनाना है. I will have to import if from collections, import DQ. DQ of अपना name. Oh, sorry. राइट, हमने ये कर लिया. नाउ वी कैन से while q.
visited is equal to set of source. Now the node जो है अपना q dot popular, जो cost क्या है, cost is equal to 0. Yep. Now I can say result of node. Sorry, ये नहीं करते. L ले लो. L is equal to len of q or whatever in range L. Node is equal to q dot top left. मैं फिर ये हटा सकता हूँ. Now I can say result of this node is equal to cost and then for next node in adjacency list of this node, right? Visited को भी set रख दो. हाँ, नहीं वो वैसे ही रहने दो. Okay. If next node not in visited dot add next node and then q dot append next node. Right? And then ये level होने के बाद I can increase the cost by 1. And now I can return result. Okay, nice. So इसके साथ we can go for a 9. Shortest path in DSG. Distance भी है. क्या? From यहाँ से यहाँ तक एक edge है and this is the cost. अच्छा, okay. ठीक है. So I think इसमें because this is a with weight, तो जो पहले आएगा that is not necessarily the shortest path. तो इसमें BFS का कुछ ऐसा advantage तो नहीं है. But इसमें वही DFS लगा देंगे. We will do a DFS from the source. नए नोड पे आके कॉस्ट को अपडेट कर देगा. ठीक है. So what I have to do is
आई डोंट थिंक कुछ चाहिए हमें. I can say input we have V and we have E. Okay, I don't really care about E. But I do care about is an goddamn adjacency list जो कि इन्होंने नहीं दी. I guess default dict इसमें ले लेते हैं. Origin अब है for u, v, cost in edges adjacency list of u dot append v, c. Right. अच्छा इसमें DFS क्या आता है? डाइस क्लास भी तो लगा सकते हैं. अच्छा एंड DFS नहीं लगेगा, डाइस क्लास ही तो लगेगा. क्योंकि DFS में क्या है, यू डू नॉट विजिट सेम नोड अगेन एंड अगेन, राइट? यू डू नॉट. बट इसमें हमको शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है, सो वी नीड टू विजिट द सेम नोड ऑल द पॉसिबल वेज जिसमें हम कर सकते हैं. समझे? तो एडजेंसी लिस्ट तो तब भी बनेगी. डिफॉल्ट डिक्शनरी. अब डाइस क्रॉस लगानी है. प्रायोरिटी क्यू इज इक्वल टू एक क्यू जिसमें जिसमें कुछ नहीं है. इसमें बस एक सोर्स है. while priority queue, now I need the distance as well. -1 into vertices source नहीं जाएगा, and the distance of source 0 to 0 priority queue में that is 0, 4. अब नोड क्या है? heap queue dot heap pop अपनी प्रायोरिटी क्यू में से कॉस्ट कॉमन नोड. ये हो गया बढ़िया. नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज फॉर ये कॉस्ट था अपना, तो कॉस्ट के लिए हमने लूप लगाया. फॉर कॉस्ट इन फॉर नेक्स्ट नोड कॉमा वेट इन एडजेंसी लिस्ट ऑफ अपना दिस नोड, राइट? हाँ. Next node cost is equal to
weight plus cost, right? If this next node cost is less than the distance of the next node, तो हम आगे करेंगे, तो प्रायोरिटी क्यू, तो हम इसमें डालेंगे हीप क्यू डॉट हीप पुश प्रायोरिटी क्यू में नेक्स्ट नोड कॉस्ट एंड देन नेक्स्ट नोड को, देन वी कैन से हीप क्यू में ये हमने डाल दिया डिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट नोड इज इक्वल टू नेक्स्ट नोड कॉस्ट, राइट? बस यही है, डिस्टेंस कर दिया हमने, सोर्स ज़ीरो कर दिया, प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया, उसको पॉप करा, और जो भी नेक्स्ट वैलिड है अगर उसका नया कॉस्ट कम आ रहा है तो डाल दो, अपडेट कर दो, बस. कैन आई नाउ जस्ट रिटर्न आर डिस्टेंस? डिस्टेंस ऑफ सोर्स सोर्स अपना ज़ीरो ही है. What the fuck is this shit, man? It's pissing me off. 0,0 is our source, and then distance of 0 is क्यूबिक करना पड़ता है क्या? इसी से होता है. क्यू कैसे यूज करते हैं? कलेक्शन. गधे यूज कैसे करते हैं? इम्पोर्ट क्यू सीधा कलेक्शन में नहीं हो. ठीक. ओके. क्या हीप पॉप नहीं हो क्या? ये 0,0 है तो उसमें जा ही नहीं रहा, या तब भी जाना तो गया है. थिंक ऐसा होता है कि नहीं जाएगा. ये अब गया तो है. प्रिंट कॉस्ट कॉमन नोड 0,0 से पॉप भी कर दिया, तो वाई द फक एडजेंसी लिस्ट मेरी सही है. 0 से 1 जा सकता, मतलब 0 से जा सकता है बस. ओके. सो प्रिंट नेक्स्ट नोड कॉमन, भाई क्या इसमें कुछ गलती है? 1 2. अच्छा, आई थिंक
हाँ, अच्छा मैं -1 से इनिशलाइज कर रहा हूँ ना। ओके। और डिस्टेंस ऑफ टेक्निकली इंफिनिटी से करता है, तो ये दिक्कत ना है। लेकिन अगर मैं इन्फिनिटी से करूँगा जहाँ पे हम पहुँच ही नहीं पाए, उसको मेरे को यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। तो आई एम जस्ट गोना गो डिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट नोड, अगर ये -1 है तब भी चलेगा। ओके, लवली। एंड ये डाइस का सही करा है ना? टोपोलॉजिकल सॉर्ट से हो सकता है। अब इसने बोला है डाइस का। ओके, सो डाइस डाइस का तो दोनों पे लगता है, डायरेक्टेड डायरेक्टेड, राइट? इसका मतलब समझ रहे हो? आई डोंट नो दिस। पिछला वाले का 10 कर देता है। एंड एक बार ये भी कर देता हूँ, 11 हो जाएगा। फिर आई एम गोना वॉच द टोपोलॉजिकल सॉर्ट की वीडियो। सेम ही चीज़ करनी है, नथिंग डिफरेंट। फ्रॉम कलेक्शंस, import default dictionary, import adjacency list is equal to default dictionary of lists for u comma v comma c in edges adjacency list of u dot append v comma c। अब कनेक्टेड मतलब तुम हर जगह पहुंच सकते हो। float of infinity into v, result डिस्टेंस कर देते हैं। Distance of source is equal to 0. Priority q is equal to 0 comma source. Then I can say while priority q cost comma node is equal to heap q dot heap pop priority q में से और next node comma wait in adjacency list of a node if this uh, next node cost
is equal to cost plus weight. If this next node cost is less than distance of next node, then we can do this. Then heap q dot heap push right क्यों में करो next node cost comma next node and result में क्या डालोगे and distance of next node cost. ये करते रहो and then we can return distance. हक दिया नहीं बात नहीं हो जा भाई ये तक पूरा so dice class तो आता है that is not a problem but now what the fuck is this thing? Dice class work on both cyclic and acyclic हाँ दोनों के तो काम करते हैं डायरेक्टेड yep दोनों के लिए काम करता है so we can do this dice class से थी right कोई दिक्कत नहीं है there is no why priority queue is used in dice देख लेगा cheapest flight से किस right अच्छा ये वो ही है वो बता देगा फिर okay so is there a way better क्या टोपोलॉजिकल सर डाइस क्लास से बेटर मैं ही जानना चाहता हूँ is topological sort better than dice class
ओके, मतलब डैक्स मुझे रिजर्व बेटर है बी प्लस यू में। अच्छा, लेकिन टोपोलॉजिकल सॉर्ट नॉन सिर्फ डैग में चलेगा, मतलब डायरेक्टेड एंड इफेक्टिव। दैट इज अ वेरी बिग वो। लेकिन कैसे कर सकते हैं, लेट्स। तो इसमें मुझे टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगाना। मान लो मैंने टोपोलॉजिकल सॉर्ट कर लिया, तो फायदा क्या है? ओके, तो लेट्स सी एक एग्जांपल से देखते हैं। वी हैव चार वर्टिसेस, 0 1 2 3 4। 0 1 2, राइट। 0 से 1 है 2। 0 से 2 है 1। अब इसमें अगर मैं टोपोलॉजिकल शॉर्ट लगाऊंगा, 0 3। 0 3 एंड देन 1 2। एक सेकंड देना गाइस। गिव मी 1 सेकंड। 26, 26, 27, 28, 29, 30, first, second, राइट। ओके, सो आई नो जिनकी भी इन डिग्री 0 है बेसिकली, उनका कॉस्ट तो -1 होगा। कैन आई एग्री टू दैट? जिनकी भी इन डिग्री स्टार्टिंग से ही 0 है, वो -1 -1। जिनकी इन डिग्री 0 से, जो भी 0 से अगर पहले आ रहा है, जैसे इसमें है, जिनकी भी इन डिग्री है वो उनका कॉस्ट -1 -1, अगर वो 0। जैसे मान लो होता है यहाँ पे 4, और ये होता, मान लो मेरा 4 पहले आता, मान लो मेरा 4 पहले आता,
तो 4 का पहले आने से क्या फ़ायदा है मेरे को? फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है, क्योंकि मैं बोलूँ अगर 1 है तो मैं 4 से 1 जा सकता हूँ, फिर 1 की डिग्री 0 हो जाएगी। टोपोलॉजिकल सॉर्ट में जो भी 0 से पहले या 0 के साथ पे है, क्या वो हम उसका मैं ये मतलब है हम 0 पे नहीं पहुँच, 0 से हम बाहर नहीं पहुँच सकते? क्या ये मतलब है इसका? तो मान लो ऐसा होता, तो क्या ये ज़रूरी है कि 4 0 से पहले आएगा? नहीं। आई कैन राइट समथिंग लाइक 0 1 2 5, अच्छा 1 है ना, आई कैन से 0 2 5 4 1 and then 3. दिस इज अ वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, एंड 4 बाद में आ रहा है, and these are who है हमारे सेम ग्रुप। ओके, सो टोपोलॉजिकल सॉर्ट से कैसे करेंगे, वीडियो देखनी पड़ेगी। सो मतलब हम सब भी वीडियो देखेंगे साथ में। Directed acyclic यप graph. यप। Given a directed acyclic graph, find the shortest path from the source. They've clearly stated that the source will always be zero to all the vertex. Okay, so basically, what does the problem state? Yeah, given a DAG. Now, what is a DAG? If you remember, it's a directed graph with no cycles. If I combine this, then you यप। call it as a directed acyclic graph. That is the definition of it. So over here, you're given a graph. Now, do you see a subtle change from the graphs that we were doing till now? Yes, you do. So if you see 0 and 1, there's an edge, but we have added edge weights to it. We are saying the edge weight is 2. That means to go from 0 to 1, it will take you 2. To go from 1 to 2, it will take you 3. So in short, if I ask you to go from 0 to 1, what is the shortest path? It takes 2. Are there any other paths in the graph? The answer to that is no. So I can say, if I say node 1, the distance is 2 because that is what it will take. For node 0, the distance is 0. Why? 0 on itself because the source node has been clearly stated as 0. So 0 to itself will be 0, right? If I ask you for the second node, it states 3. Where's the second node here? How many paths are there? One is this, which takes 5. One is this, which takes 3. So thereby the shortest path is 3. So the question is very straightforward and simple. You're given a source and it will always be 0. From 0 to all of the paths, like all of the nodes, 0, 1, 2, 3, and so on till n minus 1 node. You have to find me the shortest distance to travel, shortest distance to it. That is what the question states. So you have learned TopoSort till now, right? So you'll be applying TopoSort, but the algorithm will be slightly different this time, okay? We'll be combining TopoSort with some relaxation of edges to solve this. So I'll write the steps and the I have a process that note I'll for follow is, relaxation of first this I'll tell you one. the algorithm, then we'll go and code it so that after this process, you have a very strong hold of what we are doing. Once you understand this, I will tell you the intuition. Okay, you might think, why not intuition at the start? Because if I tell you the intuition, you might understand, but in a very blunt manner, you'll understand. You won't understand in depth. But once you have the algorithm and the code in the brain, and then I tell the intuition, you'll be able to connect it and you'll be much like it'll be easier for you to absorb it. Okay, so this is the DAG, and this is the corresponding adjacency list. This time, carefully see, the 6 has an adjacency node of 4. The 6 has an adjacency of node of 4 with a weight of 2. एक So instead of सेकंड दो मेरे को।
storing an integer. Previously, it was like 6 has an adjacency node of 4 and 5. 4 and 5. This is what we were storing, right? This time we will store pairs 4, comma 2, 5, comma 3 because this is 5. We'll store pairs this time. This time it will be list of pairs. Either you are in C++, it will be 4 and 5. This is what them will be slightly different this time. Okay, we'll be combining topo sort with some relaxation of edges to solve this. So I'll write the steps, and the process that I'll follow is first I'll tell you the algorithm, then we'll go and code it so that after this process you have a very strong hold of what we are doing. Once you understand this, I will tell you the intuition. Okay, you might think, why not intuition at the start? Because if I tell you the intuition, you might understand, but in a very blunt manner, you'll understand. You won't understand in depth. But once you have the algorithm and the code in the brain, and then I tell the intuition, you'll be able to connect it, and you'll be much like it'll be easier for you to absorb it. Okay, so this is the DAG, and this is the corresponding adjacency list. This time, carefully see, the 6 has an adjacency node of 4. So 6 has an adjacency of node of 4 with a weight of 2. So instead of storing an integer, previously it was like 6 has an adjacency node of 4 and 5. 4 and 5. This is what we were storing, right? This time we will store pairs 4, comma 2, 5, comma 3 because this is 5. We'll store pairs this time. This time it will be list of pairs. Either you are in C++, it will be vector of pairs. What you will store. If you're doing it Java, it will be array list of pairs that you will store in this particular thing. Remember the third lecture where I told you how to store graphs? If they have edge weights, you always declare it as pairs, and you store pairs where the first guy will be the adjacent node, the second guy will be the weight of that edge. Remember? So that is what I have done over here. So the question stated the source will always be 0, but we will try to solve this problem for any given source. So source can be anything. So thereby what I'll do is I'll say for this graph, assume the source to be 6. For this graph, assume the source to be 6 because I don't want you to be sticking with 0 because that will not help you out. So we can have any source because the interview might give you the question as stating as any source. So any source. Okay. So what is the step 1? So the step 1 of the algorithm is very simple. Do a topo sort. Do a topo sort on the graph. Yes. Okay. Do a topo sort on the graph. Now, how many ways do you know to do a topo sort? There are 2 ways. One is the DFS way. One is the BFS way. Do whichever you wish to. I just want the topo sort for this particular DAG, which is the directed acyclic graph. So let's quickly do the topo sort for this DAG. So I'll be using the DFS method to find the topo sort. So you know the DFS method is very simple. We always take a stack data structure which stores the topo sort. Whenever we complete the DFS for a given node, we put it into the stack. We take a visited node, that is what we take. And we always run something like this for I equal to 0 and we go until 6. And we say if not visited of I, then please call the DFS for I. If you remember, this is always done for the components, right? So what's the first value of I? That's 0. So we'll go and call the DFS for 0. The DFS of 0 is called. Whenever the DFS of 0 is called, there's node 1 straight into the stack. It's all yes. We go back to 4. So will we do it? You see 0 is visited. So yeah, it's noted. If all the DFS calls have been completed, this stack will store the topo sort. Now there's 6. I easily say that. Now what is step 2? Step 2 is very, very simple. You take out all the nodes from the stack one by one. Take the nodes out of the stack one by one. Nodes out of stack. And relax the edges. You'll hear this term a lot going forward, and relax the edges. Okay? This is the step 2. So in order to relax the edges, we need to declare a distance array. And that should be marked with infinity. Let's do it. The distance array has been declared, and what you'll do initially is just make sure everything is marked as infinity. Now, let's start relaxation of the edges. But before that, please make sure whatever is your source node, just go to that source node and make it 0. Just make sure that you go to that source node and say that, hey, I know one thing. If you start from 6 and if you end at 6, the distance that you'll take will always be 0. So make sure you do that, okay? Next, whatever is on the stack stop. This is stack stop. Stack is always last in, first stop. So the last in was 6. So this is stack stop. So make sure you take it out. So node equal to 6 has been taken out. Now, whenever you add 6, you know the distance to 6 is 0. How did you figure this out? Because that is what it was stored over here, right? Now figure out the adjacent nodes of 6. The adjacent nodes of 6 is 4 and 5. The adjacent node of 6 is 4 and 5. So try to go there. So you'll be like, okay, I'll try to go to node 5. I'll also try to go to node 4. Okay, these are the 2 nodes that I'll try to go to. These are the 2 nodes that I'll try to go to. Now, have a careful observation. Have a very careful observation on this graph. In order to go from 6 to 5, which is this, what is the edge weight that is required? 3. Do you see? 3. So you say, if I go, I'll require a 3. So can I say, if in order to reach 6, I require a distance of 0. From 6 to 5, I require a distance of plus 3. Can I say the overall distance will be 3? Because from 6 to 6, it was 0. And from 6 to 5, it is 3. So the overall distance will be 3. And you see, to node 5, it was infinity, right? And if you see, we're reaching a distance 3, which is better. 3, obviously. So you go and update this to 3. You go and update this to 3. Don't do anything else. Just go and update. Similarly, see over here, to node 4, what will you require? 2. So please do a plus 2. The distance will be 2. Similarly, go to node 4 and say, you'll require a distance of 2. You will require a distance of 2. Done? Once you have checked out all the nodes, complete it. Next, get the next node out, which is 5. And let's see what is the distance taken to 5. That states me that the distance has been taken as 3. It's clearly states as 3. The distance is 3. What does it mean? Whatever was the source node, in order to get to node 5, I required a distance of 3. That is the meaning of it. So for node 5, look at the nodes. So the nearby node is 4. So
So the nearby node is 4. How much will it take if it goes from 5 to 4? 1 plus 1 is what it will take. Let's say the distance. So previously it took 3 in order to reach from 6 to 5. That's taking plus 1. The total distance will be 4. 3 plus 1 is 4. मतलब And ये if you तो carefully see, सिंपल in order to reach node 4, I already have a better option. I already have a better option of 2. So will I take this 4? No. Why? Very सिंपल simple. बस It's हर from एक 6 to नोड के 5. From 5 to 4, नेबर्स it का will be चेक 4. कर रहा है And बट from 6 इन to द 4, it will just be 2, टोपोलॉजिकल which we ऑर्डर already have taken. So हाँ nothing to be दोनों done. टोपोलॉजिकल Or ऑर्डर method to solve. बेनिफिट Next, क्या दे take the रहे next guy, node 4. At the moment you take node 4, what happens? One is loaded to very simple. I can हैं? मैंने रीस्टार्ट कर give दिया you welcome back. Once you have checked out of 4, what happens? Is our answer. Yes, this is something which you will do. Now the next thing that I'll do is the adjacency of the adjacent nodes, which is node plus we add it up. But as of now, there's a trick. I'll go here and I say, okay, they're expecting if it is 1e9 to see out infinity, not reachable. They're expecting 1e9 instead of intermax. So I'll just assign 1e9 because what they're expecting is if it's not reachable, it should be 1e9. So I just did a slight hack. I just checked in, but I'll ask the problem setter to update the problem statement. Don't worry about that. I'll now quickly run this off and see if it is running fine. Okay, it is. So all of these test cases to pass. So we have understood the algorithm. We've understood the code. Now let's discuss the time complexity. Then we'll go across with the intuition. What is the time complexity? A topo sort. Plain DFS. Whatever time the DFS takes. What about this? The number of nodes is what the stack will always give you. That's for sure. The number of nodes is what the stack will give you, which is n. Into all the neighbors. Into all the neighbors. So if I ask you, 8 iPad times 8 times, can I say overall additive ranges, which is m? But this is very obvious, right? Because the stack will give you n. And in total, the adjacent nodes is nothing but the number of edges only. So we have understood the and a lot more, which helps us to find the shortest path. All those algorithms, in the next half of the series, we'll learn algorithms like Dijkstra and a lot more, which helps us to find the shortest path. All those algorithms work. Those algorithms will definitely work. But why did we do a topo sort? Let's understand. So what was the topo sort for this? If I write it was 6, 5, 4, 2, 0, 1, 3. Something I know for sure is there is no one before 6. There's no one before 6. So something I know for sure is the initial guy is 6. So I took the initial guy to be 6. And 6 took me to 4 and 5. So apparently, once I started from 6, which was the topo sort, then I could go to the next guys, and that will always be in my topo sort only. Because topo sort starts with the first guy who has no one into it, and then takes to the next guys who he was into just. So it takes it to 5 because it was just to 5. And 5 says, I'll take you to 4. Alright. So what topo sort did was it stated as the first guy, I don't have anything. So I'll start off from myself. And since I was the source node, I'll assign myself to be 0. I'll go to 5. I'll figure out the answer for 5. Then I'll go to 4, figure out the answer for 4. Then I'll go to 0 and 2, figure out the answer for them. Then I'll go to 3. Then I'll go to 1 and I'll figure out. So what I did was I moved sequentially. The nodes which are reachable first, I moved them. Then this, then this, then this, then this, then this, then this. I moved according to reach. Okay, I got it. Let's try. Try, but okay, adjacency list तो सेम ही है. Keep नहीं चाहिए हमें. या the same adjacency list से हटा दो. Now I need to do a topological sort. तो stack बना लो एक. We need a visited. And we need a topo sort. I need the node and add a cyclic तो है नहीं तो सब node चाहिए मुझे. So do one thing. For next node in topo sort. Next node cost से मेरे को अभी कोई लेना देना नहीं है. In adjacency list of node, I can say do a topo sort for this next node, right? And then after doing all these topo sorts, I can say stack dot append a node. All right. Can I say this? I can. I can say this, and then I can add it and visit it. Then I can say for node in range v, if
node not in visited, do a topo sort वहाँ से, do a topo sort कहाँ से, उस node से, right? We can do this. Now I say, now we have the topological sort. For node ins, now we need the distance array. Initially everything is infinity. Distance of 0 is equal to 0 क्योंकि source है. Now I say, for node in, stack, stack का reverse. Alright, do one thing. What I want is, node तुमने उठाया, node से तुम कहाँ कहाँ जा सकते हो. For cost is equal to distance of this node, right? For next node in adjacent, for next node comma weight in adjacency list, of this node. Next node का cost is equal to जो पहले cost था पहुंचने तक plus weight, right? If this next node cost, this is less than the distance of this next node, then sure update it. Yeah, see there, I can do this. Distance of next node is equal to minimum of distance of next node and what next code cost. We updated the distance array neighbors के लिए, and now we can return our distance array. And this will be a better time complexity. Never mind. Okay. So अगर let me put this as -1, and then I can say, never mind, उसको float ही रहने दो. Return a list of distance if distance is not equal to float of infinity, else -1 for distance in अपना जो भी ये था, distance. Okay, looks good now. Let's try. Okay. Okay, अपने कोड किया टाइम हो गया. Why is that?
एक को सिर्फ टोपोलॉजिकल सॉर्ट ही करना है, राइट? एक ही नोड पे आई कैन रीच मल्टीपल नोड्स। ओके, नोड इन। ओके, सो क्या हो रहा है? वेयर एम आई फकिंग अप? नेक्स्ट नोड। while stack node is equal to stack। हाँ 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 हाँ। 1010 तक तो हो गया। इज इट बिकॉज मैं फ्लोट ऑफ ले रहा हूँ? चार हजार इंटू 10⁻5। एक सेकंड का चल बोलूंगा।
फक, मैं जब से आया था मैं तब से म्यूटेड हूँ। बट एनीवेज, नेक्स्ट सवाल पे आ गया हम। सो है, दिस इज एन डायरेक्टेड, दिस इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड मतलब साइक्लिक है, साइक्लिक है मतलब टंगी है, जीरो, जीरो राइट। क्या डाइस क्रॉस लगा दे इससे में? कैन वी अप्लाई डाइस क्रॉस एल्गोरिथम? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो डाइस क्रॉस की क्या जरूरत है सर? मुझे डीएफएस स्ट्रक्चर, एक कॉस्ट का मैट्रिक्स मैं बना लूँ, आई थिंक चल जाएगा वो भी। तो अगर मैं कॉस्ट का मैट्रिक्स बनाऊँ, रोज इज इक्वल टू लेन ऑफ ग्रिड, number of rows 1 2 3 number of, yep, and columns is equal to len of grid of 0. Okay, cost is equal to grid of float of infinity into the number of columns for whatever in range. सॉरी, एक मिस्टेक हो गई मुझसे। अगर मैं डीएफएस लगाता हूँ शॉर्टेस्ट पाथ से, वी फक्ड अप, राइट? क्योंकि डीएफएस में एक को तुम एक ही बार विजिट करोगे, लेकिन इसमें तुम ऐसे, इसमें लेकिन कॉस्ट सबका सेम है मैट्रिक्स में। तो डीएफएस ये बीएफएस इज गोइंग टू बी बेटर चॉइस, नो? ऊपर जाने से भी फायदा हो सकता है। बहुत नीचे गए फिर राइट पे गए फिर ऊपर जाओगे। आई थिंक बीएफएस हो जाएगा, वी डोंट नीड डाइस क्लास, सो बीएफएस
कॉस्ट भी नहीं चाहिए तो होता है। राइट, वी कैन से q is equal to 0, 0, 0, I, j, cost, right? Now I can say for while q visited भी चाहिए होगा, visited सेट है अपना 0, 0, right? While q node r, c, I, j, cost is equal to q dot pop left, and this has to be a dq, right? I j है, तो इसको चारों डायरेक्शन में को ऐड करना है। if I is equal to rows minus 1 and j is equal to columns minus 1, then we can just return जो cost आया वो, and यहाँ पे cost क्या रख लूँ मैं 1 या 0, अगर अगर वही आखिरी हुआ तो 0 होना चाहिए cost। कॉस्ट तो मेरे को डालने की ज़रूरत ही नहीं है, आई नीड ओनली आई को। और अब क्या होगा, अब मेरे को आई नीड माई एन फॉर डैश इन रेंज एन, ये सारा बाहर हटाओ, राइट, पॉप कर दिया तो रिटर्न कर दिया, वरना इस आई जे के 8 बच्चे हैं, 8 के 8 डालने पड़ेगा। अब 8 बच्चे कहाँ से डालूँ मैं? आई कैन से फॉर डिस्टेंस इक्वल टू या तो 1, 0 या फिर 0, 1, 0 नहीं होगा ना, या 0 भी हो सकता है, या फिर 8 चाहिए ना, तो भैंचो सबसे ऊपर क्या आएगा मेरा, एक रो माइनस कर दो,
and same column. -1 top left, -1 0 एकदम ऊपर, -1, उसके उधर, अब एकदम राइट पे, -1, -1, राइट। अब यहाँ पे आएगा आई नीड टू डू राइट, so I need 0 and 1, and then I want 0, minus, -1 एकदम उसके उधर। अब 3 बचे, 1, -1, 1, 0 and 1, 1। अब for di, dj in distance, nu I, nu j is equal to I plus di, j plus dj. Now this for this nu I, if 0 से less than equal to nu I rows and 0 से less than equal to nu j less than columns, so that means a valid cell and grid of nu I of nu j is equal to 0 and nu I, nu j not in visited। अब ये है मेरा वैलिड, तो क्यू डॉट अपेंड कर दो, न्यू आई, न्यू जे एंड विजिटेड में ऐड कर दो, विजिटेड डॉट ऐड न्यू आई, न्यू जे, राइट, ओके, एंड जस्ट कीप गोइंग डूइंग दैट अंटिल वी रीच इट। और अगर हम कभी पहुंच ही नहीं पाए तो वी कैन रिटर्न -1। लेट्स ट्राई दिस। ओके, अच्छा कॉस्ट बढ़ा ही नहीं रहा, तो ये एक पूरे लेवल होने के बाद अगले लेवल का कॉस्ट होगा। ओके, तो पहले वाले का कॉस्ट 1 लेके चलो, इसमें मेरा पाथ कैसे बन रहा, लेट्स सी, 1 0 0। अच्छा पहला वाला ही वो है, इसलिए बन रहा है। मैं पहले वाले के तो लेके चल रहा हूँ कि खाली डी क्यू ले लो, if grid of 0 0 is equal to 0 1, sorry, I can just return -1 की पहुंच। 1 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
लेट्स ट्राई। ओके वर्क्स। डाइस क्लास नहीं लगाना पड़ा, बीएफएस से हो गया। अगर बीएफएस से हो सकता है तो टेक्निकली डीएफएस से भी हो सकता है, जो कि हाँ डीएफएस से भी हो सकता है क्या। एक बहुत लंबे रास्ते से मैं एक आगे इसका छोटा रास्ता भी था, तो मैं छोटे रास्ते आऊँगा। मैं डिसाइड हो सकता है बस उसकी कॉम्प्लेक्सिटी विल बी प्रिटी बैड, क्योंकि अगर मैं क्योंकि डीएफएस में क्या है, अगर मैं इस नोड को इस लंबे रास्ते से पहले आया राइट, तो इसके हिसाब से मेरा कॉस्ट है 1 2 3 4 राइट। लेकिन अगर मान लो इसका एक छोटा रास्ता भी था जिसमें बाद में आया, उसका कॉस्ट क्या था, 1 2 3 राइट, 1 2 3। तो 4 के साथ में आगे सारे प्रोसेस कर चुका हूँ, वो पूरा डीएफएस मेरे को 3 के साथ वापस करना पड़ेगा राइट। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी विल बी मच वर्स, इसलिए बीएफएस करिए, क्योंकि बीएफएस से ये हैव गारंटी जो पहले आ रहा है वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ से ही मिला है हमें। एंड वी कैन अप आवर नंबर टू पाथ विद मिनिमम एफर्ट। सेम सेम सवाल लग रहा है। ओके, ये थोड़ा घूम कर आके अजीब सा सवाल दिया। एकदम पहला पढ़ के मेरे को थोड़ा ग्रीडी लगा ऑनेस्टली। बट सो टेक्निकली हम इधर है, हमको यहाँ जाना है मिनिमम एफर्ट के साथ। एफर्ट क्या है, मैं 1 से 3 गया तो एफर्ट मेरा 2 लगा, 3 से 5 एक और 2 एफर्ट, तो हर कंसेक्यूटिव सेल पे एफर्ट लगता है। अब इट इज़ नॉट, अभी वेट्स वाला सवाल आ गया। इट इज़ नॉट कि ये कि बीएफएस से करोगे तो जो सबसे पहला है वो सबसे बेस्ट है। वो तभी काम करता है जब सबका हर एक ट्रैवर्सल का सेम कॉस्ट हो। इसमें वो नहीं है, सो इसमें आई थिंक डाइस कार्ड लगा देंगे। कैन वी यूज डाइस कार्ड? आई थिंक वी कैन। डिस्टेंस बना लो पहले, 1 0 0 1 -1 0 0 -1 0 0 1 -1 0 0 -1। यू आर इन अ प्रायोरिटी क्यू, 0 0 पे तुम खड़ो एंड कॉस्ट तुम्हारा 0 है। अब तुम बोलते हो हर एक सेल का कॉस्ट कितना होगा। डिस्टेंस इज टू फ्लोट ऑफ इन्फिनिटी इंटू रोज कॉलम निकालनी पड़ेगी। रोज इज इक्वल टू 5 कॉलम्स इज इक्वल टू लेना 5 of 0
into columns for dash and range, and ये पूरा एक लिस्ट. Right. Now I can say while. Now एक और चीज करनी है, distance of. I can call it effort as well. Effort of 0, 0 is equal to. Now I can say while priority q, v plus c, right? if तो आएगा नहीं, तो नोड लो. Cost comma I comma j is equal to eq dot keep for our priority q, right? Cost मैंने निकाल लिया, मतलब नोड निकाल लिया अभी तो. अब इससे कहा जा सकता है फॉर di comma dj in distance nu I comma nu j is equal to I plus di comma j plus dj, right? If 0 less than equal to nu I less than rows and 0 less than equal to nu j less than columns, that means valid है. इसका path निकालो. And distance of nu I nu j, if this is greater than जो नया distance है, नया distance क्या आएगा? Cost plus, अब जो और effort लगेगा, absolute value of grade of nu I nu j थोड़ी गलत हो गया, yep, minus grade of I comma j. अगर ऐसा है, दोनों वैलिड है, एंड जो पहले डिस्टेंस छोड़ था हमको उससे बेटर डिस्टेंस मिल गया, तो ई क्यू डॉट ई पुश, what should I push? The new cost. तो नया कॉस्ट है, एंड देन न्यू आई कॉमन यूजर इज ए न्यू कॉस्ट बना लो. इट लुक्स नॉट रीडेबल एट ऑल. सो अगर ऐसा है, न्यू कॉस्ट ये है, इफ न्यू कॉस्ट is less than distance of nu I comma nu j, new cost comma nu I comma nu j. ओके, वैलिड है, नया कॉस्ट ये है, अगर कम है तो डाल दो. एंड देन एफर्ट ऑफ nu I and then nu j is equal to new cost.
Right, I can say this for sure. Okay, okay, I can say this for sure. अगला क्या काम है हमारा? DI comma DJ and distance. ओके, हमने सारे फॉर्म कर लिए. if एक सेकेंड फोन आ रहा है.
Okay, guys, I'm back. Yeah, so if I is equal to rows of -1 and j is equal to columns -1, return cost, वरना नया कॉस्ट निकालो, अगर वो बेटर है तो डाल दो, एंड प्रायोरिटी खत्म होने पे नहीं मिला तो ऐसा तो हो नहीं सकता, मतलब तुम जा तो सकते हो. Let's try this. ग्रिड नहीं है, हाइट, सॉरी. प्रायोरिटी क्यों मैं करूँ. पहले एरर दे ही नहीं रहा था, मतलब. एक सेकंड आया. जीरो. कुछ तो हक दिया मैंने. राइट एंड नीचे, राइट मतलब राइट मतलब 0 1 या 0 1 है. एंड लेफ्ट मतलब 0 - 1. नहीं, -1 0. Yep. नहीं, नीचे मतलब 1 0 1 0 एंड 0 1. इफ न्यू कॉस्ट प्रिंट न्यू कॉस्ट कॉमा न्यू आई, तो डाल क्यों नहीं रहा हूँ. तब इसमें तो आ ही नहीं रहा, वरना वो एरर देता कि मैंने गलत फोन आ तो रहा. 1 0 इधर आ गया. 1 0 इधर, and then सॉरी 0 1 का एफर्ट. एफर्ट तो निकाल रहा है, इसमें नहीं आ पा रहा क्या. प्रिंट
एरर देगा नहीं, रॉन्ग आंसर दे रहा है तो। तो मैं यहाँ आया, मेरा न्यू कॉस्ट निकला 2। अच्छा डिस्टेंस तो है ही नहीं। अच्छा अब डिस्टेंस नहीं एफर्ट है ये। ऑल दिस शिट फॉर टाइप, नॉट इवन टाइप। हाँ, so I am saying output chart। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चार चार के पाथ से भी आ रहा है। इसका आउटपुट 2 कैसे है? अच्छा, अच्छा मैक्सिमम चाहिए। मेरे को लगा हर एक उसका वो होगा, मतलब किसी भी पाथ में मैक्सिमम वो क्या है वो। ओके, दिस शिट इज बिट मोर अनोइंग। वरना तो ये वाला पाथ है, जब दो इधर सेम सेम, दो इधर। फिर तो वैसे डीपी से हो सकता है। नहीं, नहीं डीपी नहीं होगा। आई मीन डाइसर इज अ फॉर्म ऑफ डीपी ओनली, आई थिंक सो। तो नया कॉस्ट मान लो ये। अगर कम है तो डाल दो। अगर किसी पाथ पे मैं कम एफर्ट से पहुंच सकता हूँ। नया कॉस्ट क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ, या तो जो अभी आया हूँ मैं, जो मैंने जंप अभी करा, या जो जंप पहले से ही चल रहा था, एफर्ट ऑफ। एफर्ट आएगा मुझे। यप, ओके, वर्क्स। I don't know if this is the most optimal, I don't know। यूनियन फाइन।